Hello friends, this is Pratibha Suparna with a new video. So far we have talked about Abacus. What is Abacus? Why we should learn about it? How it helps us to improve our calculation? How it helps us to develop our brain? And then we talk about the various parts of Abacus, answer bar, upper frame, lower frame, all the beads, all the rods. We have talked about the value of the rods, the value of the beads. Then we learn how you can do addition and subtraction on Abacus, right? For addition, you need to move the bead towards the answer bar. For subtraction, you have to move the beads away from the answer bar, right? Then we came to know that there are few questions which we will not able to, solve like that only. So we need to learn few formulas, right? So we have talked about big friends. We learn that we take base as 10 and we have few friends. Friends means that the addition should be 10, right? Like 6, it is having friend as 4, 9 having friend as 1, 8 having friend as 2, 7 having friend as 3, right? So addition of them is always 10, right? So I'll try to speak in English and then here and there I will speak in Hindi also so that you can understand it both the languages. So अभी तक हम लोगों ने big friends positive components पढ़े हैं. Big friends positive components. Big friends means that where the base is 10, because later on we are going to learn about small friends also, where the base will be 5. Okay, like in the unit place, you remember this is your unit place, the middle rod. So in the unit place, all these rods are having value 1, this rod have value 5. Okay, so for big friends we have to move to the next rod. So we take this 10 as your base value. Okay, and for the small friend we take 5 as your base value. Then positive component. पॉजिटिव कंपोनेंट मतलब यहाँ पर हमारे पास जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सब एडिशन के होंगे. ठीक है, we'll be having all the formulas for addition. If you remember, we learned in last videos these formulas. Plus 9 is plus 10 minus 1, right? So I gave you example that you are going to a shopkeeper and you have to give 9 rupees but you're not having change. So you gave him 10 rupees. So how much money he will give back to you? Obviously 1 rupee coin, 1 rupee note or coin, whatever it is. So इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं. सेम वे प्लस 8 इज प्लस 10 माइनस 2. ठीक है, तो कहीं पे किसी क्वेश्चन में आपको 8 ऐड करना है बट यहाँ पर आपके पास बीड्स अवेलेबल नहीं है. ठीक है, यहाँ यूनिट प्लेस पे बीड्स अवेलेबल नहीं है. लेट्स से ऑलरेडी 5 नीचे है तो आपके पास सिर्फ 4 बीड्स हैं जिनकी वैल्यू है 4. तो आप 8 कैसे ऐड करेंगे? यू विल बी मूविंग टू नेक्स्ट रॉड एंड प्लस 10 माइनस 2, यानी कि आप एक प्लस 10 कर देंगे और फिर माइनस 2 कर देंगे. मान लीजिए 7 है तो आप इसको नीचे कर देंगे, 2 रॉड्स को, 2 बीड्स को नीचे कर देंगे, राइट? Getting it or not? If not, then please go to the last videos and have a look to all these formulas, how you solve such questions. ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पहले कुछ फॉर्मूला, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस लेंगे जहाँ पर हमने जितना अभी तक पढ़ा है मेरी लास्ट वीडियोस में. इफ़ यू आर फॉलोइंग ऑल माई वीडियोस यू मस्ट नो द जर्नी. तो जितना हमने अभी तक पढ़ा है हम वो सारे फॉर्मूलाज को यूज़ करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ऑलराइट, let's begin. It's going to be fun today. So 26 plus 4 plus 3. This is our question. 26 कैसे बनाएंगे? मैं जो लोग आज ही वीडियो में आए हैं उनके लिए बता दूं. आपको जैसे आप नॉर्मली पढ़ते हैं स्कूल में 2 6 है ना, तो 6 आपका 1th प्लेस पे आ गया, 2 आपका 10th प्लेस पे आ गया. अबैकस में जो सेंट्रल रॉड होता है वो आपका 1st प्लेस होता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला रोड आपका 10th प्लेस होता है. ठीक है, तो आपको 10th प्लेस पे क्या है 2, तो आपको 2 बीट्स ऊपर करते हैं. यूनिट प्लेस पे आपका है 6, तो आपको 5 एंड 6. ठीक है, ये इस रॉड की वैल्यू होती है 5, इसकी वैल्यू होती है 1, तो 5 and 1 6. So 2 in the 10th place and 6 in the unit place. So you made 2 on the 10th place and 6 in the unit place. This is 26, right? So now we have to add 4 to this. But as you know, we are having only
3 beads available and each bead is having a value 1. ठीक है, यूनिट प्लेस पे जो नीचे वाली बीड्स होती हैं उन सब की वैल्यू 1 होती है, तो आप 4 तो ऐड नहीं कर सकते. सो नाउ यू आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला प्लस 4 इज प्लस 10 माइनस 6. ऑलराइट, आप कैसे करेंगे? यू विल गो टू टेंस प्लेस, आप एक 10 ऐड करेंगे और 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो इसका मतलब आपने 4 ऐड कर दिया. यही करते हैं कि अगर आप शॉप पे गए हैं और आपको 4 रुपीज़ देने हैं बट यू डोंट हैव 4 रुपी चेंज, तो आप 10 रुपीज़ देते हैं और शॉपकीपर आपको 6 रुपी वापस दे देता है. राइट, यही हमने यहाँ पर किया है. अब आपको 3 ऐड करना है. ये आप सिंपल कर सकते हैं, 1 2 3. यू मूव 3 बीट्स टुवर्ड्स द आंसर बार. जब भी आपको एडिशन करना होता है तो आप जितना आपको ऐड करना है उतनी बीट्स टुवर्ड्स द आंसर बार, यानी कि आंसर बार की तरफ उसको मूव कर देते हैं. ठीक है, सो आंसर इज 33. 3 on the tens place, 1 2 3 and 3 on the unit place, 33. This is your answer. Got it? If not, अगर आपको समझ नहीं आ रहा ये +4 का फॉर्मूला कैसे आया, so you need to watch the earlier videos. All right. Let's do our next question. 36. Add 3, add 2, add 3. 36. So 3 on the tens place, 6 on the unit place. Yes. Now we have to add 3. Do we have beads available? Yes. This time we have beads available. 1 2 3. So we will move these 3 beads towards the answer bar, which gives us 39. Now you have to add 2. Yeah, means 0 2 means 2 on the unit place. But you have no beads on the unit place. अब क्या करेंगे? So अब आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे, +2 इज +10 माइनस 8. जब आपको 2 रुपये देने हैं शॉपकीपर को और आपने 10 रुपये दिए हैं तो आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे? 8 रुपीज़. तो आपको क्या करना है? +10 माइनस 8. जब किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी मूव द बीड्स अवे फ्रॉम द आंसर बार. हम बीड्स को आंसर बार से दूर कर देते हैं. -5 -6 -7 -8. ठीक है, इस तरीके से आपने 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया. एंड नाउ यू हैव टू ऐड 3. दोबारा से आप 3 ऐड कर सकते हो. 1 2 3. व्हाट इज योर आंसर? हु इज गोइंग टू टेल मी? 44. 4 on the unit place and 4 on the tens place. Very good. So I'm ending this video. In our next video, we will be starting a new topic, negative component big friends. Means we will be having the formulas for subtraction. Let's say you need to subtract a number, but you are not having beads available. You cannot subtract it as it is. So how you are going to do that? Okay. Till then, see you. Take care. Bye.